Hello students, the question is the work function for a photosensitive surface is 3.315 electron volts. The cutoff wavelength for photoemission of electrons from the surface is given options are option A 150 nanometer, option B 200 nanometer, option C 375 nanometer and option D 500 nanometer. So the problem is based on the topic photoelectric effect. In the photoelectric effect, there is a particular topic in which we study about the work function. Work function is the minimum energy required to eject any electron from the metal surface. So it is denoted by phi. So phi here is given. It is given in electron volts, 3.315 electron volts. So this is basically the minimum energy required to remove the electron from the surface of the metal, eject the electron from the surface. So we can treat this as energy. So phi, or the energy, the minimum energy, is related to the wavelength by this formula hc upon lambda, or we can say that lambda cutoff. This is basically the cutoff wavelength. Cutoff means the particular wavelength above which no electron is ejected, because this is the specific value of wavelength, and if we go above this wavelength, then there is no ejection of electron, and if we go below the wavelength, then there is injection of electron, because we know that there is a reciprocal relationship between the energy and lambda, and there is a directly proportional relationship between the energy and the frequency. So in this way we can say that this is the particular specific value of wavelength above above this wavelength there is no ejection of electrons. So this is the cutoff wavelength. So cutoff wavelength we can calculate as hc upon phi. So this comes out to be 6.636. This is the Planck's constant. 6.636 into 10 to the power minus 34 joule seconds, and c is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, which is the speed of light, and phi is given in electron volts. So we have to convert it into joules basically, because h is in joule second in the SI unit. So this phi must also be in SI unit. So 3.315 into 1.6 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So this is in meters. So we can say that, easily see that this is 6.636, nearly equal to 2 times of 3.315, nearly equal to. So these values are specified in your board exam question paper. Starting you can see these values. Uh, this data is provided to you. So this is 2 times, and 2 into 3 is 6. 6 upon 1.6 into 10 raised to the power minus 34 plus 8 and plus 19. So in this way this comes out to be, or we can say this as 6 upon 1.6 into 10 raised to the power minus, this is 7, minus 7, or in other words we can say this value is 600 upon 1.6 into 10 raised to the power minus 9 nanometers, because this is in meter, and this is also in meter, and this thing we have rearranged this particular form because we have to answer this is in nanometer, and 10 to the power 9 minus 9 is corresponding to nanometer. So the next step is 600 upon 1.6 nanometer. Up to this step, this is in meters, and we remove this 10 to the power minus 9, we get the result in nanometer. So after solving this, we get the value as, this value comes out to be 375 nanometers. So in this way option C is correct here. Option C करेक्ट ऑप्शन होगा. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है वर्क फंक्शन किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस का 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है. इसकी कट ऑफ वेवलेंथ पूछी गई है जिसके के लिए उस सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट हो जाएं, और 4 ऑप्शंस गिवन है हमें 150 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 375 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर. आंसर्स हमारे नैनोमीटर में है, तो मैं अपने रिजल्ट को फाइनली नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना होगा. हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन वो पर्टिकुलर एनर्जी होती है, वो पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी होती है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. तो यहाँ पे एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वेवलेंथ से हम जानते हैं, E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा,
एनर्जी की जगह हम फाई रखेंगे यहाँ से, तो कट ऑफ वेवलेंथ हमारी निकल के आएगी hc/फाई। फाई की वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू जूल्स। उसके लिए हमें 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इन जूल्स। स्पेसिफिक वैल्यू एच की यानी प्लांक्स कांस्टेंट की हमें पेपर में दी होती है, हमें रिमेंबर हो तो अच्छी बात है। 6.63 के राउंड अबाउट इंटू 10⁻34, और इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं 6/1.6 इंटू 10⁻7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, ताकि ये पावर 10⁻⁻9 में आ जाए। उसके बाद हमने वैल्यू कैलकुलेट करी तो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 375 नैनोमीटर। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।